Let's quickly get started. I told you there are two ways. One is you can create a recovery service vault and then add a machine, which you will have to do ultimately. So practice with that. Another one is you can start creating from here. You can come to here, come to this machine, disaster recovery. It's not in ready position yet, so let's wait. So either you can go there and add this machine. That is one thing which you can do, and the another one is you can do the disaster recovery from here. So I told you when you do it from here, you have a little bit of edge that you can't go wrong sometime. Why? Because where is this machine hosted, by the way? Can someone tell me where is this machine hosted? Uh, uh, East East US. US? East Yes. US? Yeah, this is my source region, which is East US. So now, if I want to select East US, and what am I doing here? Replication. Is it advisable or is it possible to do the same in East US? No, we can take other region as well. Right. No, you have to take other region. When you say you have to, you can take other Yeah, we region have as to. well. Yeah, I'm sorry. Yeah. Yeah, we have to take the other region So now look because at this. When I do it from machine level, it doesn't even give me East US. So there is no way I can go wrong. But when I do it separately, maybe I've forgotten where my machine is, or मैंने अपना recovery service vault भी East US में ही बना लिया. And when I go to that recovery service vault and try to add a machine which is in East US, then I won't be able to add it. And then my whole efforts which I put in while creating recovery service vault, they are wasted. I'll have to delete them. I'll have to delete that and then create another recovery service vault. So it's better option that you come from here. So less chances that you can go wrong. Now, where can I replicate this? Do you think there are some restrictions or I can replicate it anywhere? Or do we have a list of region, etc.? So you can't replicate anywhere. We can actually. Other than East US, where my source region is, I can replicate anywhere in the world I want to. Let's say, where is it? It's in East US. I want to replicate it to Switzerland. I can. I want to replicate it to India. I can. I want to replicate it to Australia. I can. It's up to me. Okay? Technically, I can. However, what are the recommendations? Recommendations are that you replicate it to the paired region. Do you remember the concept of paired region, guys? Yes. We saw in the storage account. But in storage, paired region was compulsion. You did not have any option. So do not get confused between that and this concept. So here under storage, look at this. When you used to select GRS, जो replicate करता था, if you do it in Canada Central, it will by default go to Canada East. That is your paired region. That is in storage. However, when I do correct. the replication, it's up to me. I can select any region. However, the recommended is that you select your paired region. Yes, sorry, someone was asking something. Okay, if no questions, we'll proceed. So in storage, you do not have an option to select or choose a region. However, in disaster recovery, you do have an option, but the recommendations are you take the paired region. Why? Because in paired region, between the paired region, they have their dedicated line. Microsoft has their own dedicated line, which makes the replication very faster. So you can utilize that feature. Hence, it is recommended to take paired region. Otherwise, you can take any region. That's completely fine. Is this clear, guys, to everyone? Correct. Understand. So my actual machine is in uh, East US and I'm Sir, replicating it to West US. Yes. sir, if we take dedicated fast paid region, then we will be recover fast like that. Yes, definitely. Okay. Okay.
लेकिन So सोहेल, जब हम माइग्रेशन करते हैं hmm, तो उस समय पे हमें बताया जाता है ना कि आपको कौन से रीजन में इसको माइग्रेट करना है। no, we are not talking about the migration as of now. We are talking about the नहीं, जो, replication. हाँ जी, ये जो रेप्लिकेशन आप बता रहे हो, Hmm. हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो यहाँ Hmm. पे जैसे अभी आपने बताया कि हम कोई भी रीजन ले सकते हैं, तो Oh, जब so हम your इसको point प्रैक्टिस, is कि आपको टिकट में आएगा या नहीं? Yeah, definitely. हाँ You जी, don't हाँ, decide it. करेक्ट, हाँ, Guys, हम most of डिसाइड the नहीं करेंगे things, वो। yeah, most of the things here I'm teaching you, it's for your knowledge. Because even if you present yourself as an implementation engineer, you cannot simply say कि यार मैं 4 साल से काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ and I don't have any knowledge, मैं बस जो आता था उसको कर दोगे। वो काम एक इंजीनियरिंग का फ्रेश आउट बंदा भी कर देगा 3 लाख के पैकेज पे। काम आपका वही है, बट यू शुड हैव अंडरस्टैंडिंग कि इसके बैकग्राउंड में लॉजिक क्या चल रहा है। यू शुड नो दैट। बट यस, यू आर राइटली सेड, यू विल नेवर एवर गो एंड डिसाइड द रीजन, बिकॉज इट्स नॉट ओनली द बैंडविड्थ। सिर्फ ये बैंडविड्थ वाला एस्पेक्ट नहीं है रीजन सेलेक्ट करने के बिहाइंड। रीजन सेलेक्ट करने के पीछे अगेन कंप्लायंस आ जाएगा, रीजन सेलेक्ट करने के पीछे पैसा आएगा, किस रीजन में कितना ये हम लोगों को पड़ रहा है, पॉलिटिकल, जियो पॉलिटिकल, बहुत सारे इश्यूज आते हैं। सो दैट विल बी डन विद द एप्लीकेशन टीम के साथ मीटिंग्स वगैरह करके। योर आर्किटेक्ट टीम विल डू दैट। सो व्हेन यू से बताया जाएगा, सो यू आर करेक्ट, राइटली यू आर सेइंग आपको टिकट में डेफिनेटली आएगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, बट यू शुड नो कि क्या इसके पीछे क्या स्टडी हुआ होगा, क्या था, हाँ, क्या क्या। लॉजिक, हाँ, बराबर, हाँ। ओके, सो वेस्ट यूएस वी आर टेकिंग, then we can start replication, but let's go ahead and check advanced settings now. When I am doing the replication, when I do the replication, तो ये replicate करेगा हर एक चीज को, exactly हर एक चीज को नहीं, there is a matrix, उसमें बताता है कि क्या चीजें replicate होगी, क्या नहीं होगी। I will tell you few options, यहाँ पर मेजर चीजें मैं बता दूंगा, remaining आप लोग एक बार मैट्रिक्स चेक करने का कर लेना। I'll share the link. So what will it replicate? It will replicate my resource group. Okay, here I have a resource group called dr, there I will have a resource group called dr-asr. ये dr तो मैंने नाम दिया, ओके, इफ इट द नेम वाज सुहेल तो वो होता सुहेल हाइफन asr, इस तरह से कुछ नाम होता है। asr का मतलब है Azure साइट रिकवरी। इज इट क्लियर गाइस? डोंट गेट कंफ्यूज, ये dr सर, asr क्यों? dr जैसे हमारा दिया हुआ नाम है, अगर यहाँ पे कोई और नाम होता, इफ इट वाज सुहेल देन यू विल सी सुहेल हाइफन asr, या आपका नाम उसका हाइफन asr. So this is what we have in East US. This is what we are creating or will get created in West US, जो हमारा disaster recovery का site चल रहा है. Then here I have a VNet, a virtual network called DRVM virtual network. So there I will have a virtual network called DRVM virtual network hyphen ASR. वर्चुअल नेटवर्क का नाम भी सेम होगा, हाइफन ASR होगा। सेम रेंज यहाँ पर यूज हो रहा है, सेम रेंज वहां पर भी यूज होगा। सो यू वोंट हैव टू क्रिएट समथिंग। नाउ यू गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन बैकअप और इसमें। बैकअप में अगर आपका पूरा रीजन चला जाता है एंड इवन इफ यू वांट टू रीस्टोर फ्रॉम दैट, तो आपका रीजन चला गया मतलब आपका वीनेट भी चला गया, राइट? आपका आईपी वगैरह सब कुछ चला गया, सबनेट वगैरह सब कुछ डाउन है जब तक वो रीजन डाउन है। सो अगर बैकअप के थ्रू आप किसी और रीजन में अप करना चाहते हो, यू विल हैव टू क्रिएट ऑल दीज थिंग्स, बट व्हेन इट कम्स टू रेप्लिकेशन, ऑल दीज थिंग्स विल गेट क्रिएटेड ऑटोमेटिकली। तो आपका ये सेम वहां पर रेप्लिकेट हो रहा होगा, ठीक है? देन अवेलेबिलिटी, वेर यू आर रेप्लिकेटिंग, यहां पर तो मेरा सिंगल इंस्टांस है, राइट? मेरे एक्चुअल मशीन जो है ना सिंगल इंस्टांस है, बट वेर आई एम रेप्लिकेटिंग, वहां पर मुझको अवेलेबिलिटी सेट में चाहिए या अवेलेबिलिटी जोन में चाहिए, इफ इट इज पॉसिबल। अगर उस जोन में अवेलेबिलिटी जोन है उस रीजन में, देन ओनली इट इज पॉसिबल, अदरवाइज मुझको अवेलेबिलिटी सेट में चाहिए, या वहां पर भी मुझको सिंगल इंस्टांस ही चाहिए। इज दिस क्लियर गाइस? दीज ऑप्शंस, ओके, करेक्ट। this one is talking about source. Okay, what configuration do we have in source? And this is on target, that how do we want it on target? Proximity group, let it be बहुत small, कभी मैं बाद में समझा दूंगा, otherwise just read it, एक one liner है। proximity placement group का मतलब होता है कि if you can create a group और उस ग्रुप को यहाँ पर सिलेक्ट किया करो, तो आपके मैक्सिमम सर्वर जो है ना आसपास के रैक में बनते रहेंगे। it's not that important, so let's leave it. Now capacity reservation group, let's leave it. Storage setting, we don't have to change anything here, but I'll show it to you कि वो काम में क्यों आता है, स्टोरेज की बात क्यों हो रही है यहाँ पर। I'll explain it to you later, जब ये बन जाएगा ना, we'll have a diagram, I'll show it to you that which storage it is talking about. Then replication setting, continuous replicate होता रहेगा ये, लेकिन कितना old? See, I told you when it is being replicated, let's say my machine A is being replicated
to machine A-ASR, और अभी 5 मिनट पहले मेरे इसमें एक वायरस आ गया, और पूरा ये 5 मिनट पहले एक वायरस आ गया, राइट? सो व्हाट डू यू थिंक, मेरा जो रेप्लिकेशन बन रहा है, will that virus affect over there also or not? सोर्स Yes, it will मशीन affect. में वायरस आ गया and it is being replicated, राइट? वायरस वहां पर भी चला जाएगा, एंड आफ्टर 2 आवर्स आई हैव अ डिजास्टर। जो मेरा ये पूरा का पूरा बिकॉज ऑफ वायरस, ये मेरा पूरा का पूरा सेटअप जो है पूरा बंद हो गया। इट्स नॉट अ रीजन लेवल डिजास्टर, लेकिन मेरा सब कुछ यहाँ पर इस रीजन में बंद हो गया। then the copy which I have over there and in the target, is it useful for me? No. No. No, right? No. So to avoid that situation, we are saying replication policy of 24 hours. So it won't have only one snapshot, it will have multiple snapshot in past 24 hours. तो एक अभी का होगा, let's say 344 का होगा, एक होगा 340 का में भी, तो एक होगा मेरे पास 315 का, एक होगा 3 o'clock का भी, एक होगा मेरे पास 2 o'clock का भी। So now I know कि वायरस कितने बजे हिट हुआ था, 3:15. So whichever best copy I have at 3 PM, I can pick that और वहां से मैं डिजास्टर रिकवरी शुरू कर सकता हूँ। उतना डेटा लॉस होगा, नो डाउट। वैसे भी उस डेटा में अगर वायरस आ गया तो वो आपके लिए कोई काम का है ही नहीं डेटा। क्लियर गाइस टू एवरीवन? What does it mean, the replication policy? Yes We guys, can yes, no, customize maybe. it, no? Yes, you can. Not from here, you can, but उसके लिए policy change करनी पड़ेगी. But it's not required. Mostly you will see it 24 hours. But do you understand by this कि इसका क्या मतलब है? Why do we have it? समझा। Then you have extension settings. Can you recall it? What is extension, guys? When do we use extensions? Can't recall it? If I have a virtual machine, if I'm using availability virtual machine scale set, virtual machine scale set में क्या होता है? Yes, guys. What happens in virtual machine scale set? स्केलिंग अप स्केलिंग होता है ना? अब स्केलिंग होता है मतलब नए मशीन्स बनते हैं, राइट? हाँ जी, तो न्यू करेक्ट। मशीन बनते हैं तो जैसे मेरा जैसे वो जैसे फॉर एग्जांपल अगर सीपीयू हाई जा रहा है और अगर हम लोग उसको अपस्केलिंग करते हैं तो ऑटोमेटिक वो मतलब वर्चुअल मशीन बनाते रहेगा, राइट। तो जैसे अगर भी कोई हम उसको ब्लैंक वो मशीन बन करेंगे। रहा है, सो इज इट यूजफुल फॉर मी? एकदम ब्लैंक मशीन बन रहा है, इज इट नहीं, यूजफुल? राइट। सो व्हाट डिड वी नहीं। लर्न उस टाइम? हमने देखा था कि यार एक तो इमेज हो सकता है, otherwise we can use extensions कि every time a machine is being created उसमें XYZ चीज ऐड हो जानी चाहिए, उसमें ये एप्लीकेशन अपने आप ऐड हो जानी चाहिए। those are extensions, if you guys recall it. Do you guys हाँ, remember it, guys? बताया था आपने। So that is what it is. Then that your machine when it gets created over there, कोई एप्लीकेशन अपने आप उसमें इंस्टॉल हो जानी चाहिए क्या? So as of now we are not changing that policy also. Is this clear, this page to everyone? सोहेल, मुझे एक क्वेश्चन है। जैसे कि हम माइग्रेशन ये एएसआर जब हम करेंगे तो अगर रिक्वायरमेंट आई है कि जैसे 10 वर्चुअल मशीन को एएसआर में मतलब कि माइग्रेट ये करना है साइट टू साइट रिकवरी में, तो फिर वो हम लोग को एक एक जाके करना पड़ेगा या फिर कैसे होगा वो? No, I just explained you, right? I told you. Option is there that you can go to, you create one recovery service vault. We just explained that, right? You can create one recovery सॉरी service vault, and here you can come and check site recovery. You can check how many machines are here already. All these details you can check. By the way, this is what I was talking about, the storage account. I'll explain it later. Okay. And if you want to add something, enable it, you come here. What do you want to enable it? Where are your actual machines? Are those machines on Hyper-V? Are they on your VMware? These are on-prem machines, or are those machines on your Azure? So those are on Azure virtual machines. So let's say enable, and then you select your virtual machines. You select your region, select your subscription, select your resource group जहाँ पे आपके ये है virtual machines है. You select all of those details and you start selecting those machines. यहाँ पर नहीं दिखेंगे because I have only one machine and which is already a part of some other इसी का हिस्सा है, तो वो नहीं दिखेगा.
You cannot have one machine. एक machine पे आप Okay. 2 disaster recovery और 2 backup नहीं लगा सकते हो, right? But if I Okay. had more Okay. machines, तो यहाँ पर दिखते हैं, मैं उसको simply check करता and next कर देता. Okay. You won't Okay. even see it if you're वही मैं explain कर रहा था, if you remember, कि अगर आपका recovery service vault आपने East US में ही बना दिया और VM East US में बना दिया तो वो भी नहीं दिखेगा यहाँ पर. हाँ, correct. Correct. Okay? Now look at this guys. My location here is Switzerland North. वहां कहीं मैंने ये कर रखा है, इसलिए मुझको वो machines वहां पर दिख रही थी. Clear? How will you add multiple machines? You Yes. won't go, or and for the Thank first machine maybe you can create it from here, और ये recovery service vault बन जाएगा, इसमें आप दूसरे machines ऐड कर लो. If you don't want to create it from scratch, कि यार यहाँ से scratch से जाके recovery service vault बनाना is a difficult task, ये सब क्या है, then if you don't want that, so you can create first replication from there, and जब recovery service vault आपका बन जाता है, then you add another machines. Is it clear guys to everyone? Guys, this is very important topic. Yes. Please do not hold your questions. Do not think what is silly question. Don't worry about it. Whatever it is, even if you think it has been covered, do not hesitate to ask. If it's too much for me to explain, I'll ask you to go ahead and watch the video. If it is small, I will explain it again. It will be answer for you, revision for others. But do not skip something thinking that care nahi पूछना है या फिर I'll do that later. वो नहीं होगा. And this is very important topic. इसके बिना आप लोगों को migration नहीं समझेगा ना. I have already explained, right? Migration is very important. So do you guys have any questions here on this part, at least target settings? Yes, sir. Okay. And by the way, it's not necessary कि इसी तरह का नाम हो, कि you can change these names etc. वो जो है आप पहले से एक resource group बना कर रखो और उसको select कर लो. You can do that. But it's always recommended इसी के साथ जाओ आप. That's okay. Then I click next. And if I click start replication, it will start the replication. Now look at this. It is creating target resources. Now it is creating a resource group. Now if I check the resource groups, look at this. You won't see any resource group with that name. DR ASR नाम का कोई resource group फिलहाल नहीं है यहाँ पर. Okay, I have my DR resource group, but I do not have any DR hyphen ASR. And we'll refresh it in some time. And we should see that. So look at this. Can you guys see it? DR ASR आ गया. Correct. Dear. कहाँ पर बन गया वो? West US में. Now if I open it, look at this. It has created a virtual network. If I go and check, ये virtual network का configuration और मेरे actual virtual network का configuration exactly same होगा. Now it has enabling the replication. It has not been done. Yeah, guys, if I want to check the exact steps and all the steps, where can I check कि क्या हो रहा है अब इसमें? Replication की details मुझको check करनी है. Where can I check? Recovery service vault. Yes. Recovery service vault. Go to that recovery service vault. I think it's still being created, but the one which we already have उसमें बता देता हूँ. Go to recovery service vault. I don't want to enable site recovery for anything. I don't want to enable backup for anything. I want to check कि अभी क्या हो रहा है exactly. Okay, so I can check replicated items. If I see my machine here, look at this. What is it doing now? It is enabling the protection. If I want to check more, click on that. See, prerequisite check for enabling the protection कि OS में सब कुछ सही है. कोई, by the way, one thing to remember, बहुत सारे issues आते हैं इसमें. So it's always a good idea in production environment to patch your server completely and reboot it once or twice before you start the replication. It's always a good idea. पूरा उसको अच्छे से up to date रखिए, patches वगैरह कीजिए, whichever patching services they are using in their environment, do that, and then reboot the machine, and then you start the replication. Then it will install the mobility service and preparing the target. It is at this stage. Then it will enable the replication. Then it will start initial the replication. मतलब वो start करेगा replication करना.
देन फिर बहुत देर के बाद रेप्लिकेशन हो जाएगा. इसको अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स लगेंगे ये सारे प्रोसेस को. इज इट क्लियर गाइस टू एवरीवन? Yes, guys. Yes, no, maybe, doubts? सोहेल, मुझे एक क्वेश्चन है. ये पैचिंग एक्टिविटी होता क्या है, मतलब इसमें होता क्या है बैकग्राउंड में? Ignore that. We'll cover that later. It's very simple thing and it's not your job. You just have to tell OS team to make sure that it is already patched. You don't have to worry about it. अच्छा, ओके. Yes, guys. Any other sir. questions related to this one? Yes, sir. Can you go back Here? little bit back? No, back when we have started enable and थोड़ा सा और पीछे गए थे देखो सर. Backup recovery and enable उधर आए थे देखो सर, ऑप्शन आया था. Wait. Yeah. So I am in site recovery vault and here I can see Sir, the replicated items. सर थोड़ा पीछे गए अपन वो जो. हाँ, मेरा पीछे का क्वेश्चन और एक थोड़ा सा पीछे. Okay. सर इन दोनों में क्या फर्क है? एनेबल एंड बैकअप में क्या फर्क है? You are enabling the backup from here. You are enabling the site recovery from here. It is just that enable backup नहीं लिखा है, but they are same thing. यहाँ से आप backup के लिए machines add कर सकते हो. If you click on this, you can select machines for backup. Policy वगैरह ये कर लो and add machine. Again, I don't think so I will see any machine because I have only one machine and it's already being backed up. So I can't see any machine here. So you can add machines for backup from here and you can add machines for site recovery from here, which we are doing currently. Look at this. Okay. If I साइट रिकवरी मतलब सर मतलब पूरा समझा नहीं. साइट रिकवरी मतलब what we are doing now, that is site recovery. I have been telling you that's Azure site recovery, DR, all are same thing. Okay. See, if I click on backup, ये यहीं पर ले जाता है. Keep focus on this one. If I click on backup, it takes me to the backup. उसी वाले backup window पे ले जाता है वो. And if I click on site recovery, look at this. It takes me to the site recovery. तो आप यहाँ से चले जाओ, backup वगैरह start करो, यहाँ से करो, or you do it from here. These are the same thing. Okay, sir. Clear, guys? Okay, sir. Any other questions, guys? I have a question. Yes. As it is making a new resource group, then we should having a active also on that level, or it is necessary to make a resource group, or we can avoid that. Sorry, didn't get you. When we are replicating the items, it is making a new resource group, right? Right. So we need to have an access on that subscription to make a resource group, to make the replication, or we can You're not going avoid across the making a resource subscription. group. You're not. Yes, on that particular subscription, yes. On that particular subscription, when your site recovery vault is creating, it's okay. It's not checking your access, but to the what do you say, to initiate or to configure the site recovery itself, you required at least contributor access. If you don't have the contributor access on the subscription, you can't do this. Okay, right. So we cannot avoid that step for making a resource group. Sorry, again, didn't get your question. We can avoid making a resource group, and we can replicate the virtual machines or items in the same resource group. No, you can't. A different resource group will be created. How can you create the same resource group? आपकी machine है East US में, right? ये इसका let's say East US में ये है, इसका कोई resource group है, वो भी है East US में. Though it can be anywhere. यहाँ पर है East US में. अब आप जो ये RSV बना रहे हो, ये किसी और रिसोर्स ग्रुप में ही बनेगा और ये किसी और रिसोर्स ग्रुप में ही बनेगा. RSV तो चलो आप वहां पर भी बना लो, रेप्लिकेशन तो डेफिनेटली किसी और रिसोर्स ग्रुप में बनेगा. सो यू कैन नॉट अवॉइड दैट. And to initiate the backup or to initiate the recovery service vault, you need contributor access.
बाय डिफॉल्ट आपको इस पे कंट्रीब्यूटर एक्सेस लगेगा ही, उसके बिना आप बना ही नहीं पाओगे। ठीक है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay. Now look at this. It is enabling the replication. Yes, guys. Any other questions you guys have? If no questions, let's quickly see how it looks once it has been done. Now we are not waiting for 2 hours इस machine को complete होने के लिए. So what I have done, I have already enabled the replication on this machine. इस machine पे मैंने 2 दिन पहले से ही replication on करके रखा है. So I'll show it to you how it looks and how can you utilize it. Replication तो हो गया, fine, everything is okay. Replication वगैरह हो गया, I'm happy with that. इसको मैं यूटिलाइज कैसे करूंगा? हाउ विल आई डू द डिजास्टर रिकवरी एक्चुअल में कैसे करूंगा? सो इफ आई गो टू दिस मशीन, ये मशीन भी काफी स्लो चलेगा, आई होप आई एम एबल टू क्रिएट अ वेबसाइट ऑन दिस सो आई कैन शो इट टू यू गाइस कि ये यहाँ पर चल रहा है, देन हम इसको बंद करेंगे और रेप्लिकेशन वाले में भी इसका वेबसाइट जो है चलेगा. आई होप वी हैव सफिशिएंट टाइम. लेट्स क्विकली सी. No, it is not able to connect to this machine, giving some error. So let's imagine that this machine has some website. Now I'm not able to configure on this one, but you guys can do it whenever you try to replicate a machine. If not website, at least go to that machine, create a notepad over there, a file, something. So you can cross verify कि आपका सब कुछ डेटा वगैरह है या नहीं. ठीक है, वो कर लिया आपने. उसके बाद आप उसको इनेबल कर दो रेप्लिकेशन को. 1-2 hours जितना भी टाइम लगेगा. You come back here और यू गो देयर और वहां से आप आइटम्स चेक कर लो सारे, वो भी चल जाएगा. फ्रॉम एनीवेयर यू कम टू दिस स्क्रीन रेप्लिकेटेड आइटम. आप डायरेक्टली मशीन से आ जाओ और यू गो टू दैट रिकवरी वॉल्ट. यहाँ से रिकवरी वॉल्ट एंड चेक रेप्लिकेटेड आइटम्स. I'll see 2 machines. See, this is 0% synchronized, guys. By the way, look at this one also. I'm sharing random things with you. Please make sure you remember them. If not, watch the video and prepare your answers. Right? Replication health. What does it mean? Healthy का मतलब है कि it's healthy to be synchronized. It doesn't mean that it is synchronized. And look at this. It shows synchronized 0%. So it is being synchronized now. And when it is completely synchronized, it shows protected. इस तरह से वो दिखेगा. एंड वार्निंग का मतलब है कुछ ना कुछ वार्निंग होगा, उसमें कोई एजेंट रीस्टार्ट हो रहा होगा, कुछ होगा. राइट? सो यू कैन कम हियर एंड यू कैन क्लिक ऑन दिस मशीन and this is what you will see, or you can go to that machine and click on disaster recovery and this is same page. आप वहां से आ जाओ या यहाँ से. Look at this. The path is recovery vault, recovery vault, replicated items, and then I clicked here. यहाँ पर मैं डायरेक्टली उस वर्चुअल मशीन पे चला गया और डिजास्टर रिकवरी पे क्लिक किया and I am here. Now look at these options quickly. ये वाले ऑप्शंस मेजर है, इनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ. फर्स्ट, ये ऑप्शंस इजी है. रेप्लिकेशन हेल्थ, ये हमेशा हेल्दी बताना चाहिए. इफ देयर इज सम वार्निंग यू शुड गो एंड चेक. बट वार्निंग का मतलब कोई एरर नहीं है, कुछ काम नहीं रुकेगा, छोटा मोटा वार्निंग होगा. इफ यू गाइस वांट यू कैन गो अहेड एंड चेक. हाँ, एक वीएसएस वाला अपडेट का वार्निंग है, बट दैट्स फाइन. स्टेटस प्रोटेक्टेड. व्हाट डज इट मीन? प्रोटेक्टेड का क्या मतलब हुआ कि इट इज बीइंग सिंक्रोनाइज्ड कंप्लीटली. पहला सिंक कंप्लीटली हो चुका है, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन. RPO, I told you guys, recovery point object. इसका मतलब क्या होता है? मैं कब से डेटा लेकर आ सकता हूँ. So when was the last time it got synchronized, guys? 3 मिनट पहले ही हुआ है. Right, 3 minutes. और 3/12 को आज ही हुआ है. Right, 3 minutes पहले ही हुआ है. उसमें भी because on my machine I do not have activities, इसलिए 3 minutes पहले हुआ है. Right, otherwise उससे भी कम टाइम होता है. इस यहाँ पे कोई इशू नहीं है, यहाँ पर कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है यहाँ पर. सो इट्स ओके. कभी कभार अगर नहीं चलता है रेप्लिकेशन वगैरह, सो यू कम हियर एंड चेक के कहीं एजेंट आउटडेटेड तो नहीं है, अनहेल्दी तो नहीं है, एजेंट का वर्जन आउटडेटेड तो नहीं है. एवरीथिंग यू कैन चेक हियर. कितनी बार ये मशीन रेप्लिकेट हो चुकी है यहाँ पर. लुक एट दिस कि यहाँ पर अगर वायरस वगैरह है तो आई विल गो अहेड एंड रेप्लिकेट. यहाँ से मैं इसको रीस्टोर कर लूंगा. ओके, नाउ स्टोरेज अकाउंट, द वन विच आई वाज टॉकिंग अबाउट, वहां पर जो हमको दिख रहा था, क्यों बन रहा था वो कि डायरेक्टली आपके मशीन से
ईस्ट यूएस से डेटा वेस्ट यूएस में नहीं जाता है। व्हाट हैपेंस, ईस्ट यूएस से आपके मशीन से डेटा जाता है एक कैशे स्टोरेज में, स्टोरेज अकाउंट बनता है, उसमें टेम्परेरी डेटा जाता है कैशे, और वहां से देन जाता है वो साइट रिकवरी में, एंड वहां से जाता है एक डिस्क में, और वहां पे देन आपका वो पड़ा रहता है। एंड व्हेन यू वांट टू डू द फेल ओवर, इसी डिस्क से आपकी मशीन बनती है। लाइक यू क्रिएट मशीन फ्रॉम एन ओएस डिस्क, उसी तरह से आप यहाँ पे कोई मशीन का स्नैपशॉट लो और उसी से आप मशीन बना सकते हो, उसी तरह से यहाँ से आपकी मशीन बनेगी, बट दैट विल बी इन वेस्ट यूएस। इट इज इन ईस्ट यूएस आपकी एक्चुअल मशीन, यहाँ से डेटा इमीडिएटली यहाँ चला जाएगा एंड देन यहाँ से मूव होगा। डायरेक्ट मशीन से मूव, मशीन टू मशीन मूव होता होगा तो इसके परफॉर्मेंस पे ये होगा, राइट, इतना डेटा वहां पे थ्रूपुट देने के लिए। हेंस वी हैव अ कैशे स्टोरेज अकाउंट, यहाँ पर ये होता है कैशे स्टोरेज अकाउंट, सेम इसमें होगा, राइट। एंड डेटा रियल टाइम यहाँ से यहाँ जाता है, तो ऐसे नहीं कि ईस्ट यूएस डाउन हो गया तो मेरा कैशे डाउन हो गया और डेटा का क्या है, डेटा यहाँ रुकता ही नहीं है। डेटा इज ट्रैवलिंग फ्रॉम हियर टू हियर, इमीडिएटली इट इज गोइंग हियर एंड देन हियर, अल्टीमेटली डेटा यहाँ पर सेव हो रहा है विद इन मिनट्स, which is in west US. So if something goes wrong to your east US, you don't have to worry about it. Is it clear, guys, still here? Understand. Okay. So now let's do, if you want to do the failover, when we say that we have disaster recovery वगैरह सब कुछ है, so that's fine, but it is not going to happen it automatically. ये नहीं होने वाला है कि आपका ईस्ट यूएस का सर्वर डाउन हो गया तो अपने आप यहाँ पर अप हुआ, नो, दैट्स नॉट द वे इट वर्क्स। जैसे ही वो सब कुछ सर्वर डाउन हुआ, आप लोगों को इंटीमेशन आने लग गए that this application is down, this server is down, etc. ईमेल वगैरह आ गया, माइक्रोसॉफ्ट से आपने चेक कर लिया व्हाट इज हैपनिंग, माइक्रोसॉफ्ट ने बता दिया कि भाई ये रीजन डाउन चला गया है, मिनिमम 4 days के लिए डाउन होगा। दैट टाइम यू विल कम टू दिस पेज, यहाँ पर आके यू विल do the failover. Now you guys understand that why you don't require your recovery service vault in East US. Imagine कि आपका ये recovery service vault ये भी पूरा East US में होता और आपका region down हो गया. Will you be able to see these options? ये दिखेगा ही नहीं क्योंकि ये सर्विस भी आपकी अपने आप डाउन हो जाएगी। जैसे ही रीजन डाउन होगा, इवन दिस सर्विस विल बी डाउन, आरएसपी वाली सर्विस। Hence you require this in some other region. Is it clear, guys, to everyone? Correct. Now, when Microsoft has confirmed that this region is down for 2-3 days, now you have decided, let's do the failover. Failover is the process where you bring up these machines. Okay, it is recommended from Microsoft that you always do a test failover in 180 days. हर 180 days में एक test failover करते रहना चाहिए. So we have not done the test failover ever. So let's quickly check the test failover. Actual failover हम बाद में करते हैं. So if I click on test failover, now look at this last process, the lowest RTO, it's at this time. If I want some old point, I can take this, but I am happy with this one. अब ये कौन से वर्चुअल नेटवर्क पे जाना चाहिए, क्योंकि इट इज गिविंग मी एन ऑप्शन कि ये कौन से वर्चुअल नेटवर्क पे जाना चाहिए। आई कैन सेलेक्ट एनी, क्यों, ये वाला सिर्फ मेरा टेस्टिंग के लिए है, सो इट कैन गो टू एनी वन, इट्स ओके, एंड आई क्लिक ऑन टेस्ट फेलोवर। द मोमेंट आई डू द टेस्ट फेलोवर, it is bringing up my machine and it is not shutting down my actual machine, guys. Actual machine को अब तक कुछ नहीं हुआ है. Why is it not bringing down my actual machine? क्योंकि this is just a test failover. हम टेस्टिंग कर रहे हैं यहाँ पर. उसमें भी ये क्या करेगा, लास्ट मशीन से जो है ना, इस टाइम के बाद भी एक फाइनल उस मशीन को अप लाने से पहले एक और बार फाइनल ट्राई करेगा, जितना भी डेटा सिंक हो सकता है वो सब कर लेगा, एंड देन इट विल स्टार्ट ब्रिंगिंग अप द मशीन. नाउ इन सम टाइम I should have another virtual machine here, and unfortunately I do not have a website here in this machine. Otherwise मैं आपको बताता कि आप उस मशीन के भी पब्लिक आईपी पे जाते तो आपको सेम एप्लीकेशन दिखता था. If you guys want, in next session we can repeat it again with completely एक अच्छे से website वगैरह बनाकर, and if you guys think that you guys have understood it well, then we'll go ahead with migration. I'll leave it up to you guys. पूरे वीक में प्रैक्टिस वगैरह कर लेना. नेक्स्ट सेशन लेट मी नो कि आपको फिर से एक प्रॉपर वेबसाइट वगैरह के साथ देखना है कि इसको फेल ओवर करने के बाद कैसे दिखता है, हाउ इट वर्क्स वगैरह, और यू अंडरस्टूड द लॉजिक विदाउट सीइंग दैट. सो इट्स अप टू यू गाइस. We have only 3 minutes left, guys. Let me see ये up होता है या नहीं जब तक. By the way, this is just test failover, guys. Okay, it is just test failover. इसलिए actual machine को कुछ नहीं हो रहा है.
टेस्ट फेल ओवर हम करेंगे, मशीन देखेंगे, हम क्लाइंट को बताएंगे ओके दिस इज हाउ इट वर्क्स, क्लाइंट टेम्प मशीन में लॉगिन वगैरह करके देखेगा, एवरीथिंग इज फाइन, देन यू विल क्लीन अप द टेस्ट फेल ओवर, उसमें सारी मशीन्स वो डिलीट हो जाएगी, बट यू नो कि आपका फेल ओवर चलता है, सो व्हेन एक्चुअली समथिंग हैपेंस टू योर रीजन देन यू विल डू द फेल ओवर. So still let's wait for 2-3 minutes. 2 minutes बाकी है. Let's say if this machine comes up. And irrespective of your opinion, I will take this session again. Next वाले इसमें एक और बार. Look at this guys. दिख रहा है आपको UT-Kloud 00 UT-Kloud -VM 005. इसके आगे लिख कर आ गया टेस्ट. जब हम एक्चुअल फेल ओवर करेंगे ना तो इसके आगे टेस्ट नहीं लिख कर आएगा. नाउ आई डिड नॉट गेट अ पब्लिक आईपी, मे बी मेरा पब्लिक आईपी खत्म हो गया है, ऐसे कुछ होगा, और वो दैट डजंट मैटर, मे बी आई कैन रिमूव दिस पब्लिक आईपी और इसको मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ, राइट, या फिर आई कैन टेक सम अदर पब्लिक आईपी. वैसे भी आई हैव टोल्ड यू पब्लिक आईपी में हम डील नहीं करते, दिस इज जस्ट फॉर आवर प्रैक्टिस. बट लुक एट दिस इज हाउ यू गेट द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ योर मशीन. Now if I assign a public IP, और यहाँ पर अगर कोई वेबसाइट होता, if there was a website in my server, I would have asked you to check वो वेबसाइट उसी तरह से आपको दिखता है exactly. This is how your test failover works. There are some resources which only 1 minute is left, Satish. We'll take the question next time. I won't be able to answer. Don't worry, we are No, not sir. finishing. It's Yes, changed the reason. That's what I'm saying. that's the whole point of disaster recovery, Satish. My Yeah, East US is down. I okay. cannot have a machine in East US. अगर East US up होता तो मैं disaster recovery कर ही क्यों रहा हूँ फिलहाल, हाँ, okay. right? That's the whole point. Okay. So I was saying, this is how the test failover works. It has been done. If I want to clear the test failover, I will check everything. सब कुछ चल रहा है, application owner ने मुझको go through दे दिया. I will clean up the test failover. I'll simply have to clear, put the notes that test failover was successfully completed. I'm just putting done. Testing is completed. Delete the test failover virtual machine. I click OK. और ये machine को ये अभी थोड़ी देर में अपने आप delete कर देगा. Actual failover we will see in the next session, guys. ठीक है, do practice other things meanwhile. इसका theory वगैरह देख लो. If you have any questions, we'll address them in next session next Saturday. ये करेंगे और immediately then we'll start migration का topic from next Saturday itself. Okay guys, 30 seconds are left. प्रैक्टिकल के लिए टास्क नहीं असाइन हुआ था. There is no task. You simply just create a machine, create a file, backup, restore. Simple. अच्छा, You want me to assign a task for that? नहीं ठीक है करते हैं. Yeah, please. I mean, feel free to. It's not necessary कि उसी task को करो जो मैं assign कर रहा हूँ. Now start practicing everything, whatever you have learned. Just